Assalamu alaikum and welcome back. Since we were having plenty of more questions that were asked in interview, so I'm here with those questions as well. So Assalamu alaikum. We are discussing those questions one by one. So the first question which is asked is difference between silence and pause. So as verbs, the difference between pause and silence is that pause is to interrupt an activity and wait, like, and silence is to make someone or something silent, or when there is lack of sound. So pause demands a short break, whereas silence has no length for it, and it isn't. Pause can be used for interruption, suspension, whereas silence is common imperative instructing the address to remain silent. Next is Pinteresque. So this is resembling or characteristics of the works of the English playwright Harold Pinter, in particular by having a sense of menace and featuring dialogue marked by many pauses. So he was a British playwright, and his works, or like whatever he shows, like this thing basically, the Pinterest shows the characteristics of his work, and they identify certain distinctive aspects of the work of Painter, and it gives indication of their influence on Anglo-American culture. How were the Romantics different from others or each other? So romantics were different from each other in many ways. Like इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि जैसे अगर कोई राइटर है, वो उसका फेवरेट जो एक प्लेस है, जो एक सब्जेक्ट लिखने का थीम है, मे बी वो मोहब्बत हो. एक राइटर या पोइट है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट द डिवाइन लव ऑफ गॉड. समवन इज़ टॉकिंग अबाउट पैट्रियटिज्म. कोई है जो नेचर को पसंद करता है, कोई है जो रेवोल्यूशन को पसंद करता है, कोई है जो ब्यूटी के एस्पेक्ट्स लेके आता है, कोई है जो एलिजीज लिखता है, कोई ओड्स या एपिक्स लिखता है. लेकिन सम टाइम सच कम सर्टेन मोमेंट्स जिसमें देर ऑल टुगेदर. सो ये तमाम रोमांटिक्स जो थे, इनकी एक अपनी इंडिविजुअलिटी थी, एंड प्लस दे वर पावर्ड बाय और एम्पावर्ड बाय द रोमांटिसिज्म. सो ओवरऑल रोमांटिसिज्म के सारे एलिमेंट्स को ये फॉलो कर रहे थे, और उनको वो इनके अंदर बिल्कुल शामिल थे. अपार्ट फ्रॉम देम इनकी एक अपनी भी एक आइडियालॉजी थी, एक अपनी भी एक इंडिविजुअलिटी थी, जिसमें हम देखते हैं कि ये एक दूसरे से डिफरेंट थे. किड्स ब्यूटी को पसंद करता है, शेली रेवोल्यूशन को, ब्राउनिंग वर्ड्सवर्थ नेचर को, कॉलरिज सुपरनैचुरल को. सो ऑल वर डीलिंग विद देयर सर्टेन specific themes, and also they were sharing one global stream, which was romanticism. Difference between comprehend and apprehend. Well, if we talk about apprehend or apprehension, so it is described as the awareness or understanding of something by mind. It is made of conscious, wherein mind is only aware of this thing, but does not affirm or deny about it. Whereas comprehension also means understanding, especially in the fields of education and psychology, as it is a psychological process wherein a person is aware of an abstract or physical object like a message, person, situation, and is able to think about it and knows how to deal with the object in any manner he perceives as right. So, the only thing is the mode of consciousness. इन दोनों के दरमियान जो मेजर डिफरेंस है वो मोड ऑफ कॉन्शियसनेस है. माइंड एप्रीहेंशन के केस में अवेयर होता है चीज़ के बारे में, लेकिन उस चीज़ के बारे में कोई अफर्मिटी नहीं करता, कोई डिनायल नहीं देता. Difference between intensive and extensive reading. So these are two types of reading. Out of 4 types: skimming, scanning, intensive reading, and extensive reading. So we'll be discussing skimming and scanning later on. Intensive reading is in-depth reading. So in this we read each and every detail, minute things, so that they may not be overlooked, क्योंकि हर एक चीज़ की उसमें importance होती है. For example, कोई important notification, कोई हदायत, कोई
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेटर या आपके एग्ज़ाम के लिए जो स्टडी होती है, सो दैट इज़ ऑल इंटेंसिव रीडिंग. एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ ऑन द अदर हैंड रीडिंग फॉर प्लेयर. सो ये इसे रीडिंग फॉर प्लेयर भी कहते हैं और इसमें हम बेसिकली अपनी मर्ज़ी से कंटेंट चूज़ करते हैं, मर्ज़ी से टाइम चूज़ करते हैं, मर्ज़ी से क्वांटिटी चूज़ करते हैं एंड वी mostly read it to enjoy ourselves or to kill the time. SQ3R is a formula that is linked with reading. SQ3R में the S stands for survey, Q for question, 3 R's are read, recall and review. This is just like a movie. Okay? S that is survey, that is just like a trailer of a movie जिसको आप देखते हैं. क्वेश्चन, वो ट्रेलर देख के हमारे माइंड में काफ़ी सवाल आते हैं कि ये कैसे हो गया, एक लड़का दो हीरोइंस और ये डुप्लीकेट्स या जो भी हम उसमें सिचुएशन देखते हैं. फिर 3 आवर्स पहले रीड यानी हम पहले मूवी को देखते हैं, रिकॉल वी रिमेंबर द फेवरेट सीन्स और सी देम आफ्टरवर्ड्स एंड रिव्यू देन वी गिव आवर रिव्यू दैट इज़ टू वर्क एज सर्वे फॉर समवन. सो SQ3R में क्या होता है, सबसे पहले हम सर्वे करते हैं बुक को, जो हमें करना चाहिए. दिस इज़ बेस्ट वे ऑफ रीडिंग कि डायरेक्ट रीडिंग से बेहतर है पहले बुक का सर्वे करें कि आपके इंटरेस्ट की है या नहीं, कि लोग कितना पसंद कर रहे हैं, क्या इसकी मकबूलियत की वजह है. उससे आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले रीड, फिर उसके बाद जब आप पढ़ लेंगे उसके डेफिनेटली आप उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करेंगे. फिर recall, you will be going to your favorite section of the book and review. Now you will be able to work as critic and talk about it. An abstract. So an abstract is a summary of something. But when we talk about research, so an abstract is the complete information in a nutshell that is about thesis. Tentatively, that should be of one A4 page or less than that. It also includes the key terms that we are using in our research. So abstract में आपके introduction से आपके results तक सारी चीज़ों को हम बड़ा compact करके लिखते हैं. So research proposal हमेशा future में होता है, जो हमारा abstract है वो हमेशा past में होता है because that is developed after the thesis or research is complete. So we use the past tense in that कि हमने ये हमारा topic था, इसमें हमने इस topic के लिए ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आए तो उनको एड्रेस करने के लिए हमने एक इस पॉपुलेशन में से ये सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हुए इतने लोगों का सैंपल लिया और ये टूल हमने यूज़ किया रिसर्च के डाटा के कलेक्शन के लिए और फिर हमने इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए रिसर्च उस डाटा का एनालिसिस किया. हमारे पास ये रिज़ल्ट्स आए और ये रिज़ल्ट्स ऐसे शो करते हैं कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ. सो इन दिस वे वी गिव इन अ नटशेल अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द थीसिस. Skimming and scanning are two types of reading. Skimming में हम basically skim होता है जिससे हम दूध के ऊपर से जो बलाई है उसको निकाल देते हैं. So that is the main power source of it. So इसमें हम basically क्या करते हैं कि हम उसमें उसका main theme जो है उस पे focus करते हैं. So this is like reading for gist, जिसमें हम सिर्फ gist हासिल करते हैं. हम इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू रिसीव अ लेटर, तो लेटर में जो उसका सब्जेक्ट होता है दैट इज़ इनफ टू स्किम थ्रू द लेटर. फॉर एग्जांपल द सब्जेक्ट में बी एप्लीकेशन फॉर 2 days sick leave, so you already know what is written underneath. Skimming is very important. Like John F. Kennedy was a very good skimmer. वो उसके जो वर्ड्स थे वो he would read almost 800 plus words per minute और वो बुक को हमारी तरह राइट इंग्लिश को लेफ्ट से राइट पे नहीं पढ़ता था, वो ऊपर से नीचे पढ़ता था कि वो उसको स्किम करता जाता था एंड ही वुड बी गेटिंग द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग ऑन द अदर वे इज टू फाइंड द रेलिवेंट और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. कि आपने अगर डेजर्ट को तलाश करना है डिक्शनरी में, सो आप ABC से नहीं गुजरेंगे, आप डायरेक्ट D पे आएंगे, देन D और E के कॉम्बिनेशन पे आएंगे, आगे S के कॉम्बिनेशन पे आएंगे. सो दिस यू आर स्कैनिंग. आप एग्ज़ाम का रोल नंबर किसी ज़माने में मसलन CSS वगैरह इनके रिज़ल्ट्स आते थे पेपर में, BA का रिज़ल्ट न्यूज़पेपर में आता था, रोल नंबर लिखे होते थे, तरह निकल जाता था लोगों का. सो वो जो रोल नंबर्स आ रहे हैं उसमें हम अपना रोल नंबर जो ढूंढते हैं, दैट वेरी like heartbreaking activity
और हार्ट रेंडरिंग नर्व शैटरिंग एक्टिविटी, वो जो है वो स्कैनिंग कहलाती है। नेक्स्ट वी हैव डेनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव मीनिंग। सो ये दोनों जो है इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस है। जो डेनोटेटिव मीनिंग है, दे बेसिकली डील विद द लाइक लिटरल मीनिंग ऑफ समथिंग, जिस तरह किसी चीज़ का लिटरल मीनिंग है, और कॉनोटेटिव मीन्स विद इम्प्लाइड मीनिंग्स और इनडायरेक्ट मीनिंग। For example, if I say that my friend's father loves vintage cars, so that means he loves old cars of good make. लेकिन if I say कि she loves vintage clothing, so that doesn't mean कि उसे बहुत पुराने यानी बाबा आदम के ज़माने के कपड़े पसंद हैं। इट मीन्स कि फैशन अपने आप को रिवाइव करता है, पुरानी चीज़ें दोबारा फैशन में आ जाती हैं। तो आजकल जो नए ब्रांड उन पुराने फैशंस को अगेन लेके चल रहे हैं, तो दैट इज़ विंटेज क्लोथिंग। सो एक में उसका मीनिंग लिटरल है और एक में उसका मीनिंग इम्प्लाइड है। सो फर्स्ट वन कार की सेंस में दैट इज़ लिटरल मीनिंग, और दैट द सेकंड वन दैट इज़ implied meaning, which is connotative meaning. Relation of language and society. So there is no doubt in saying that there exists great relation between both. लैंग्वेज होगी तो सोसाइटी होगी, सोसाइटी होगी तो लैंग्वेज होगी। अगर लैंग्वेज है तो उसके ज़रिए जो लिटरेचर लिखा गया उससे हम सोसाइटी को याद रखते हैं, जैसे 14th सेंचुरी लिटरेचर चौसर की राइटिंग से हमें याद है। और अगर सोसाइटी है तो फिर उसका लिटरेचर भी डेवलप होगा। अगर लोग ही नहीं है तो लिटरेचर कौन लिखेगा? एंड आफ्टर दैट वी सी कि लैंग्वेज जो है दैट इज सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, कल्चरल ट्रांसमिशन के ज़रिए होती है। ह्यूमन बींग्स लैंग्वेज को सीखते हैं एक दूसरे से, ये इनके दरमियान इनमें वो दिस इज़ नॉट इंस्टिंक्टिव। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक तजर्बा किया गया जिसमें जो मुर्गी के अंडे थे वो बतख के नीचे रखे गए और बतख के अंडे मुर्गी के नीचे रखे गए। जब उनमें से जो डकलिंग्स या जो चिक्स थे वो निकले, तो डेफिनेटली वो किसी हद तक उस मुर्गी के बच्चे डक को, डक के बच्चे मुर्गी को अपनी माँ समझ रहे थे। तो उन्होंने अपने हिसाब से बोलना शुरू कर दिया। डक ने उन्हें नहीं सिखाया कि तुमने मुर्गी की तरह बोलना है, और मुर्गी ने नहीं सिखाया डकलिंग्स को कि तुमने बतख की तरह बोलना है। और जब वो पानी के करीब लाया गया तो वो जो मुर्गी के बच्चे थे जो बतख के साथ थे, उन्होंने अपनी माँ को तैरते देखा, बट दे डिड नॉट गेट इनटू इट। लेकिन अगर मुर्गी के साथ बतख के बच्चे गए तो उन्होंने पानी में जाके, उनकी जिबिल्लत थी, सो दे स्टार्टेड स्विमिंग। बेसिकली दिस इज ऑल इंस्टिंक्टिव। ह्यूमन लैंग्वेज इज नॉट इंस्टिंक्टिव, ये इंस्टिंक्टिव नहीं है, इसको सीखना पड़ता है सोसाइटी से। सो सोसाइटी का एक ग्रेटर रोल होता है लैंग्वेज के अंदर। और सोशियो लिंग्विस्टिक्स ऑल टॉक्स अबाउट सोसाइटी, कि सोसाइटी में लैंग्वेज चेंज कैसे होती है, डायलेक्ट्स कैसे बनते हैं, डायलेक्ट्स बदलते किस तरह हैं, डायलेक्ट एक नई लैंग्वेज में कैसे डेवलप होते हैं, लोगों की आपस में कम्युनिकेशन क्या है, जेंडर कम्युनिकेशन क्या है, मेल और फीमेल की लैंग्वेज का रिलेशन क्या है। सो लैंग्वेज इज क्लोजली रिलेटेड टू सोसाइटी, कि आप इसको जुदा नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी हैव labio-dental sounds. So labio-dental sounds are the sounds which are made by placing our upper teeth on the lower lips. So इसमें बेसिकली इन्वॉल्वमेंट है टीथ की और लिप्स की। जिस तरह साउंड हम निकालते हैं v, यानी वी की साउंड, एंड अगेन फिश की साउंड। सो जब हम ये साउंड निकालने के लिए पोजीशन बनाते हैं तो इनिशियल पोजीशन में हमारे अपर टीथ लोअर लिप के ऊपर आ जाते हैं। मैनर एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स मेरे चैनल में लिंग्विस्टिक्स की प्लेलिस्ट में बड़ी डिटेल्ड डिस्क्राइब है, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट वे फ्रेंच रेवोल्यूशन. So French Revolution was a horrible and bloody revolution. It was revolution of 1789, and it was basically in France that shook France between 1787 to 1799, and it reached its climax in 1789. So like this revolution was brought by the lower class and middle class against the ruling class. और इसमें यानी इतने ज़्यादा अरिस्टोक्रेट्स को पकड़ के गिलोटाइन के ज़रिए उनके सर काटे गए कि उनकी जो रोज़ के हिसाब से एक बहुत बड़ी एक बकेट थी जो फिल की जाती थी और उन्हें टारगेट करके मारा जाता था। सो बेसिकली ये उस इनजस्टिस का रिजल्ट था। सो नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन लीव एंड क्विट. लीव इज अ जनरल आइडिया ऑफ गो अवे फ्रॉम अस, कोई चीज़ हमसे दूर जाए.
The plane leaves at 8, I leave home at 6, leave work but quit at the same time. ये लीविंग की सेंस है इसमें, लेकिन ये है कि इट इज़ टू स्टॉप वर्क, लाइक इट इज़ द क्विट वर्क मीन्स कि आपने काम छोड़ दिया. लीव वर्क मीन्स कि आप शाम को आपके ऑफिस आवर्स ख़त्म हो गए एंड नाउ यू गोइंग बैक होम. लेकिन क्विट वर्क मीन्स कि आपने उस जॉब को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया. Next is APA referencing. So APA stands for American Psychological Association. So this is a referencing system. The APA style requires two elements. So it is in-text citations throughout your assignment or thesis and a reference list at the end. So APA stands for American Psychological Association. ये जिसका MLA है, AP है, ये फॉर्मेट्स हैं रेफरेंसिंग के और साइटेशंस के. लिटरेचर में ज़्यादातर हम MLA को यूज़ करते हैं फॉर लिंग्विस्टिक्स एंड साइंसेस. APA को भी यूज़ किया जाता है. सो बेसिकली ये है कि आप व्हेनेवर यू आर गिविंग साइटेशन तो ऑथर का नेम, उसके बाद ईयर, उसके बाद उस बुक का नाम, पब्लिशिंग, कॉमास, फुल स्टॉप्स, डॉट्स, कॉलन्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इसकी MLA से डिफरेंट होती है. So Myth of Sisyphus is written by. So this is a myth. This is a book rather, written by Albert Camus. So this is the English translation by Justino Berrien was published in 1955. The original book was the original essay or the book was written in 1942, which is a philosophical essay. So this is about the myth of Sisyphus. So he links his subject with this myth. In Greek mythology, Sisyphus or Sisypheos was king of Ephra. He was punished for his self-craftiness and deceitfulness by being forced to roll an immense boulder up a hill only to roll down every time it neared the top, repeating the action for eternity. So basically, Sisyphus का क्या था कि एक किंग था किसी ज़माने में जो कि बहुत ज़्यादा डिसीटफुल था, धोखा देता था. तो इसको ज़ूस ने, जो कि ग्रीक गॉड था, पनिश किया कि ये एक बहुत बड़े पत्थर को एक ढलवान की तरफ से ऊंचाई की तरफ लेके जाएगा रोल करते हुए. और होता यह था कि जब वो ऊपर तक पहुंचता था, करीब पहुंचता था, तो वो पत्थर दोबारा रोल बैक हो जाता था. एंड ही हैड टू रिपीट दिस टाइम एंड अगेन. सो ये इटर्निटी तक इसको उस डिसीटफुलनेस की पनिशमेंट मिली. The Road to Wigan Pier is written by George Orwell, the author of Animal Farm, and also there was a question about Animal Farm. So Animal Farm is an allegorical novella by Orwell. So it was published in 1945. So this tells us about a group of farm animals who rebel against their human farmer, hoping to create a society where animals can be equal, free and happy. So basically इसने वो कम्युनिज्म, सोशलिज्म, उस पर तनकीद की, कार्ल मार्क्स की थ्योरी को जिस तरह लेनिन और लेके आगे चला, उसके बाद ट्रॉट्स्की उसके साथ और जो बाकी लोगों ने स्टार्ट में नारे लगाए कि एवरीबॉडी इज़ इक्वल. बाद में चेंज हो गया कि ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स. फिर ये बेसिकली कम्युनिज्म की इब्तदा और उसकी खराबियां हमने देखी कि फार करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट फार करप्ट्स एब्सोल्यूटली. तो जो जानवर हैं वो रियल लाइफ पॉलिटिशियंस को रिप्रेजेंट करते हैं. और ओल्ड मेजर जो कि एक पिग दिखाया गया वो कार्ल मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है, जो फिलॉसफी देता है. इनका जो मालिक है वो कैपिटलिज्म को रेफर करता है कि जो उसने जानवर रखे हैं और उन जानवरों की कमाई, उनकी मेहनत का फल वो ले जाता है, इनको उसके बदले कोई प्रॉफिट नहीं मिलता. So these were important questions asked in the later interviews for PPSC English Lectureship. Thank you very much. Stay tuned.